Good morning, all. Welcome back to my next session that is on data model. So data model, what is data model? मैं अभी आपको बता देती हूँ data model होता क्या है. Data model वो model होता है जो कि हम किस लिए यूज होता है, हमारे डेटाबेस स्कीमा को डिजाइन करने के लिए. कि डेटाबेस बेसिकली डेटाबेस आपका किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर. सो ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस किस फॉर्म में होगा आपका डेटाबेस का, दैट इज कॉल्ड द डेटा मॉडल. सो विच मॉडल आर यू यूजिंग for database designing? So concepts and tool used to describe the database schema is called a data model. So these are the most common data models. ER diagram. ER model means हम जो आपका डेटा जो हम रिप्रेजेंट करेंगे ER मॉडल के थ्रू कर सकते हैं, उसको स्टोर डेटाबेस के अंदर ER मॉडल के थ्रू कर सकते हैं. सेकेंड इज रिलेशनल मॉडल, मतलब हम डेटा को स्टोर इन द फॉर्म ऑफ टेबल कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर. एंड थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल इन द फॉर्म ऑफ ODL model. Okay. Different data models are there. They are low level data models. Low level data models are of two types, that is hierarchical data model and second one is network model. And second is high level data model. High level data model is a relational data model and we are usually using relational data model only nowadays. Okay, we store the data in the form of tables in the database. That's why we generally use relational data model only. Next, now I'm describing what is hierarchical data model. That is that shows a one-to-many relationship, as you see in the diagram. So it shows one-to-many relationships. The hierarchical data model is one of the oldest database model, so dating from late 1950s. So it is a very oldest data model. The hierarchical model organizes data elements on tabular rows, one for each instance of an entity. So each instance means value of an entity. In this model, each entity has only one parent but can have several children. You can see one parent is there, that is a root node, and several children are there. At the top of hierarchy, there is only one entity which is called root. Okay. So for example, suppose in the root, okay, we can take the example of department. So department has a course and student. Suppose department has course and second one is student. So course has ID name and student has also a ID name course. So we can categorize in this form how we are storing the data. So we can store the data in the form of hierarchical. So hierarchical model organizes data element as tabular rows, one for each instant of an entity. These are the drawbacks of hierarchical model. Cannot handle many-to-many relationships. It can handle one-to-many relationships. Cannot reflect all real life situations. So it cannot reflect all the real life situations. Difficult to perform insert, delete and update operation. It is very difficult to perform insert, delete operation in a hierarchical model. So there are several advantages also. Simplicity, data security is also there, and efficiency. Okay. It is not that much important hierarchical model. The next one is network data model. Network data model, basically it represents many to many data relationships. So it represents the many to many. Hierarchical model represents one to many and network data model represents many to many. So it is a set of model is a set of construct. A set consists of an owner record type, a set name and a member record type. A member record type can have the role in more than one set. Hence the multi-parent concept is supported. An owner record type can also be a member or owner in another set. So I will show the example of this network data model. So data in the network model are represented by collection of records. So it represents the collection of records, like for example, like this. So college, so many to many means college has a relationship with CSC, department and library. Okay, and CSC is also having a student and library, or indirectly college has also relationship with student. So many college has a relationship with many students. Okay. So it has a capability of to handle more relationships types, and it has a data independence. And disadvantage of this network data model is system complexity. So it is also not that much important. So this is a network model. Last one is a relational model.
Relational data model is very important model. Please guys, please understand what is relational data model. We will use all the 4 chapters of TBMS on based on the relational data model only. हम जो आगे जो भी पढ़ेंगे वो किस पे बेस होगा, हमारा रिलेशनल डेटा मॉडल पर ही बेस्ड होगा. सो रिलेशनल डेटा मॉडल बेसिकली इज बेस्ड ऑन द रिलेशन ऑफ द टेबल. रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, टेबल भी बोलते हैं. तो हम क्या करते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल में, हम डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द रिलेशनल डेटा मॉडल्स. So data is organized in the form of rows and columns similar to a table. Tables are referred to as relation in a relational data model. Rows of the table are referred to as tuples and column of the table referred to as attribute. Please listen. So आपकी क्या होता है, tables आप क्या करते हो, एट्रीब्यूट्स हैं. ये आपके कॉलम नेम को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं. और हम रो की पूरी वैल्यू को क्या बोलते हैं, हम टपल बोलते हैं. और इसके टेबल के नेम को हम क्या बोलते हैं, एंटिटी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एंटिटी. ओके. So every information is stored in the form of columns and rows. You can see relation name, a relation variable is a table name and table name is a entity name. तो table name को हम क्या बोलते हैं, entity name भी बोलते हैं. Attribute को हम क्या बोलते हैं, column name बोलते हैं. और हम row की पूरी value, एक row की पूरी value को क्या बोलते हैं, tuple बोलते हैं. Okay. This is the example of tabular data in a relational model. So relational model क्या होता है, आपका in the form of table होता है. So customer ID, customer name, these are the attributes and these are the values. 192 Johnson. So this is the first tuple. Second tuple, there are 5 tuples in the row. So tuples are the values of the row. So these are called the tuples. सैम्पल रिलेशनल डेटाबेस का एग्जांपल है ये. वन इज द कस्टमर टेबल. कस्टमर टेबल इज अ रिलेशन नेम और टेबल नेम और एंटिटी. सो द कस्टमर इज अ एंटिटी. सेकंड एंटिटी इज द अकाउंट एंड थर्ड एंटिटी इज द डिपॉजिटर. सो द एंटिटी इज आल्सो कॉल्ड अ टेबल नेम and table name is also called the relation name. Customer ID, customer name, customer street, customer city, these are the attributes or column name and these are the values. So these are the 3 entity. So these are the 3 entity, 3 relations or 3 tables. Next, like tuple. Tuple is a related record stored in a row of the table. Example 101 alloc MCA. These are the values stored in a tuple. Tuple is a record. हम record बोल सकते हैं. Attributes को हम क्या बोलते हैं, column. और entities को क्या बोलते हैं, tables का name. Schema. Now I will tell you what is schema. आपको already मैंने आपको बता दिया था. The overall design of the database is called the database schema. Schema is the structure of the table which is decided before storing the data. So we have to decide before storing the data. So for example, create table student. उससे हम स्कीमा किसका क्रिएट कर रहे हैं, एक सपोज करो स्टूडेंट की टेबल का हम एक स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं. तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसका रोल नंबर होना चाहिए, नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द स्कीमा. सो विच स्कीमा, स्टूडेंट स्कीमा. सो स्कीमा इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल विच इज डिसाइडेड बिफोर स्टोरिंग द डेटा. इंस्टेंस क्या होती है, वैल्यू एट अ टाइम. सो द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन stored in the database, a particular moment is called an instance of a database. For example, suppose name is a Amit. Roll number is 101 and this address that Merit, suppose. So these are the instance of these attributes. So these are the instance. Amit 101 is the instance, Amit is the instance of name of the student. Roll number is the instance, 101 is the instance of a roll number. Okay, so collection of information stored in the database at a particular moment is called the instance of a database or value of that attribute. Okay, so that's all. What is instance, what is schema? I already told you schema क्या होता है. schema आपका overall design of the database होता है कि किस फॉर्म में हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर, कि हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या है. और नॉर्मली हम किस में स्टोर करते हैं डेटा को डेटाबेस के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ टेबल, मतलब रोज और कॉलम के फॉर्म में हम स्टोर करते हैं. इंस्टेंस क्या होता है, इंस्टेंस क्या होती है, वैल्यू उस टेबल के अंदर एट अ पर्टिकुलर मोमेंट. सपोज करो अभी ये आपको सपोज करो नेम है, नेम में आपने क्या करा, आपका राकेश नाम लिख दिया और रोल नंबर उसके आगे 24 लिख दिया. सपोज करो
इस मोमेंट पे इसकी 24 रोल नंबर है, लेकिन गलती से उसका 24 नहीं 25 रोल नंबर था, तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, उसको 25 करना पड़ेगा। सो अगले ही मोमेंट में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 वो हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड एन इंस्टेंस ऑफ अ डेटाबेस। सो इंस्टेंस क्या होता है, वैल्यू के फॉर्म में होता है। ओके, थैंक यू सो मच।